Hello everyone. Let's start paper 4, May-June 2023, variance 41. The duration of this paper is 2 hours and we need to attempt all the questions. All right. So let's see what we have in this paper, but let me tell you the total marks for this paper is 100. Okay. Now question number 1. Group 2 nitrates decomposed when heated. Okay. So group 2 nitrate when decomposed on heating obviously will get metal oxide, nitrogen dioxide, and oxygen gas. Uh, Describe how the thermal stability of group 2 nitrates changes with increasing proton number. Explain your answer. Okay, thermal stability refers to charge density and polarization. So, down the group, ionic radius increases. So charge density and polarization also decreases. Which means cation cannot distort the electrons of carbonate ions. Oh, distort of nitrate ions, my bad. Distort the electrons of nitrate ions towards itself easily. Hence, more energy is needed for thermal decomposition. And therefore, thermal stability of group 2 nitrates increases down the trend. Okay. So thermal stability increases down the group. Let's move on to the next part. Copper 2 nitrate decomposes in a similar manner to group 2 nitrates. Write an equation for the decomposition of group 2 nitrates. Okay. So it's going to be like 2 moles of copper nitrate on decomposition. You will get 2 moles of copper oxide, 4 moles of NO2, and 1 mole of oxygen. So you can make this 1 mole equation as well. Okay. So you can make it for 1 mole instead of 2 mole.
So both are going to be correct. Copper nitrate is added to water to form solution A. Figure 1.1 shows some reactions of solution A. Okay, that's copper nitrate, which is solid at room temperature and pressure. When you add water in it, obviously it will turn to aqueous solution. So this solution A is basically copper H2O taken 6, 2 plus. And guys, this is going to be pale blue solution. Okay. So when you add ammonia in this pale blue solution, obviously precipitates are formed. That means you are adding few drops of aqueous ammonia. So when you add few drops of aqueous ammonia, you will get the precipitate, and the precipitate is basically precipitation reaction. And in this precipitation reaction, we can have a formula like this, or copper hydroxide dot 4H2O. It doesn't make any difference, by the way. Both are same. Okay. So when you add ammonia in this precipitate, ligand substitution reaction takes place. So let me tell you, this is precipitation reaction. This is going to be ligand exchange reaction. And obviously, it will turn to what? Cu NH3 taken 4, H2O taken 2, 2 plus, and this is going to be the dark blue solution. See, OH minus is a weaker ligand than water. So during the ligand substitution reaction, ammonia will displace hydroxide first. Later, it will displace water molecule. Okay. So first hydroxides are removed, and then later on, water is going to be removed during the ligand substitution reaction. Again, when excess concentrated hydrochloric acid, again ligand substitution reaction takes place, or ligand exchange reaction takes place. And because of this ligand exchange reaction, we'll get a complex like this, and this complex has a yellow color. Okay. Now let's discuss the question. Table 1.1 shows the formula and the color of each of the copper containing species present in this. So examiner is asking formula of copper containing species form. So ये मैंने लिखे हैं आपके लिए. इसको लिख लेते हैं. Copper H2O taken 6, 2 plus, and the color of this is going to be pale blue. Now in B, according to my lecture, it's going to be CuH2O taken 4, OH taken 2. Again, it's going to be pale blue. C is going to be ammonia taken 4, H2O taken 2, and this is 2 plus. Guys, you need to remember this charge as well, okay? You have to be very, very careful. For some complexes, there is neutral, no charge. For some complexes, we have charge, okay? So you have to be very, very careful while writing such things. It is deep blue color or dark blue color. Last but not the least, CuCl4, and this is going to be 2 minus.
and its color is going to be yellow. All right. EDTA is a polydentate ligand. What is meant by the term polydentate? A species which can donate more than two lone pair to the transition metal line so that more than two dative bonds are formed. And dative bonds are also called coordinate covalent bonds. Okay. Now the next is group 2 metal ions form complexes similar to those of transition elements. A solution of EDTA 4 minus. EDTA is basically ethylene diamine tetraacetate, which is a polydentate ligand, by the way, is added to water containing calcium ions to form a new complex. The equilibrium for this reaction is given here. So again, it is a ligand substitution reaction, guys, because EDTA is a stronger ligand, water is a weaker ligand, so EDTA can displace water very easily in this reaction. So again, it is a ligand substitution reaction. EDTA is stronger ligand, and obviously water is a weaker ligand. According to my lecture, we have done the strength of ligand in the spectrochemical series. You need to remember that, okay? Circle on the structure of EDTA 4 minus the 6 atoms that forms bond with the metal ion. Okay, the most important thing is 6 atoms that forms bonds with the metal ion. So this one is going to be the first one. This one is the second one, third, fourth. This nitrogen has a lone pair, obviously. This nitrogen also has a lone pair. So this one is fifth and this one is sixth. I hope it makes sense to you. The calcium ion in this complex and calcium EDTA have a coordination number of 6. What is mean by the term coordination number? Coordination is basically the number of dative bonds are formed between ligand and transition metal ion. Number of dative bonds are formed with transition metal ion. Okay. The next is, oh my goodness, the complex. This can be used to remove toxic metals from the body. Table shows numerical values of the stability constant for some metal ions with EDTA. Okay. And the case step key values are given. An aqueous solution containing this complex is added to a solution containing equal concentration of chromium, iron 3 ions, and lead 2 ions. The resulting mixture is left to reach a state of equilibrium. State the type of reaction when this complex reacts with chromium, iron, and this. Obviously, ligand substitution reaction or ligand exchange reaction.
Deduce the relative concentration of chromium, iron, and lead EDTA present in the resulting mixture. Explain your answer. Um, See, the higher the stability constant, the higher the concentration. So इसका मतलब iron EDTA has the highest concentration. And the complex is going to be -1 charge, okay? Then lead is going to be the least concentration thing because उसके stability constant की value सबसे कम है. Since it has a lowest stability constant की value, which means it has the lowest concentration, right? So it has the lead EDTA to minus. Now the next is what? And chromium EDTA is this. And this complex has a charge of -1. Okay. So point is very simple. Higher the stability constant, higher the concentration. Lower the stability constant, lower the concentration. Higher the value, of stability constant, then higher the concentration, and vice versa. Okay. And in class, we have discussed also that higher the stability constant value, this favors the equilibrium towards right hand side. We can add this statement as well. Hence, equilibrium favors towards right hand side. Next, seems like the calculation thing. Yeah. The number of moles of water of crystallization in a hydrated ionic salt can be determined by titration using aqueous EDTA 4 ions with a suitable indicator. 0.255 gram of hydrated chromium 3 sulfate is dissolved in water and made up to 100 cm cube of volumetric flask. 25 cm cube of this solution required 26.2 cm cube of 0.008 mole per dm cube aqueous EDTA ion to reach the endpoint. The reaction occurs according to this equation. Use the data to calculate the value of n and the formula of this complex. Show your working. How many marks we have? Oh, 3 marks. Oof. So first of all, I know the volume and concentration of EDTA. That indicates I can find the moles of EDTA, right? Okay. So in the first step, moles of EDTA O minus, it's 26.2 into 0.008 divided by 1000. So it's going to be how much? That's 26.2 into 0.008 divided by 1000. So it's going to be 2.
096 into 10 to the power minus 4 moles. Okay. Now, in a very serious note, this equation suggests that both of them have 1:1 ratio. So whatever we have calculated for EDTA, it's going to be the same for chromium 3 ions. All right. So moles of chromium 3 plus and moles of EDTA 4 minus has 1:1 का ratio. So अगर मैंने 2.096 into 10 to the power minus 4 moles calculate किए, so obviously moles of chromium 3 plus is also same, which is 2.094 into 10 to the power minus 4 moles. But याद रखिएगा कि ये moles मैंने 25 cm cube में calculate किए. ओके. अब जाहिर सी बात है, मैंने 25 cm क्यूब को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से कलेक्ट किया था और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मैंने 100 cm क्यूब में मेकअप की थी. तो इसका मतलब अगर 25 cm क्यूब में हमारे पास 2.094 into 10 to the power minus 4 moles हैं. So 100 cm क्यूब कितने होंगे? Okay. So 2.094 exponent minus 4 into 100 divided by 25 is going to be 8.376. 8.376 into 10 to the power minus 4 moles. Okay. Okay. The formula of this compound ये है. तो अगर मैं इस फॉर्मूले को आयनाइज कर दूं, so obviously we'll get 2 chromium ions, sulfate ions and water. According to the equation, we have 1 mole and we have 2 mole. अगर हमने 8.376 into 10 to the power minus 4 moles calculate किया है, so how many moles of salt okay, let me check. 4.188 into 10 to the power minus 4. Okay. The mass of this hydrated compound is given. We have calculated the moles. Then it means we can find the mass of this compound. So we know the mass, we know the moles, we can find the MR of this compound. So mass is basically how much? 0.255 gram. Moles is basically 4.188 into 10 to the power minus 4. So MR is going to be okay 0.255 divided by answer is going to be 608.88. And there's a lot of calculation for 3 marks, guys. Now we need to find out the value of n. So what we can do is कि हम इसका MR कैलकुलेट करेंगे क्रोमियम सल्फेट का और उसको इस MR से सब्ट्रैक्ट कर देंगे.
So यहाँ से mass of water आ जाएगा आपके पास 608.88 minus the MR of this salt only is basically 392.3. 392.3. So it's going to be how much mass? Minus 392.3 is going to be 216.58 gram. So I need to find the moles of water because that is going to be the value of N for me. Okay. It's 216.58 divided by 18. So, oops, 216.58 divided by 16. Oh my goodness, what I'm doing, my bad. 216.58 divided by 18. Yeah, 12.0. So N की value is 12.0 exactly. तो आप यहाँ लिख लीजिए 12.0. I hope you get the logic, but that's a lot of calculation. ठीक है? A solution of chromium 3 plus and a solution of iron 3 plus have different colors. Explain why two complexes have different colors. Colors depends on the splitting energy, as we have discussed in the lecture. So different ligands have different strengths, and so they have different splitting energy values, and so they have different complementary colors. So different ligands have different strength. So they have different they will absorb energies at different frequencies. So they will show different complementary colors. So that's the end of question number 1. I hope it makes sense to you. Let's start question number 2. And in this question, again, this question belongs to transition element. And transition element, by the way, is one of the most important chapter in A2 Chem. Okay, so some transition elements complexes can show stereoisomerism. And when we talk about stereoisomerism, meaning we are talking about optical and geometrical isomerism, all right? So examiner is asking, state two types of stereoisomerism shown by transition matrix complexes. So obviously the first one is going to be optical. And in optical, we need to consider the mirror images, okay? Instead of chiral carbon, because chiral carbon is going to be in organic chemistry instead of transition element. And the second one is geometrical. Obviously, in transition elements, we really don't have any double bonded between the carbon atom. And there is no organic chemistry in transition element, which means ऑप्टिकल में हम मिरर इमेजेस को देखेंगे और ज्योमेट्रिकल के अंदर हम सिमिलर ग्रुप सेम साइड और डायगोनली अटैच देखेंगे, राइट? The complexes PT NH3
Cl2. If you check it very carefully, very carefully, I hope you can find the logic that we have two different ligands and two similar ligands. So it's this complex shows Ml2X2 situation. And when we have Ml2X2 situation, according to my lecture, you will get geometrical isomerism in this. Okay. And again, you have four dative bonds in this. And PT, E, and taking 2 have the same geometry shape around the metal ion. En is basically a bidentate ligand. That means it can also form four dative bonds. और En को हम कहते हैं इथिलीन, डायमाइन. सो बेसिकली ये भी फोर डेटिव बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं. ओके. PT NH3Cl2 exist as two stereoisomers. Obviously geometrical है, तो one is going to be cis and the other one is going to be trans. Whereas PTEN2 only has one possible structure. मैंने आपको बताया था कि when we have two bidentate ligands, there will be no stereoisomerism. No stereoisomerism. Okay, now the state the geometry around the metal line. देखो यहाँ पर भी आपके पास four dative bonds हैं, यहाँ पर भी आपके पास four dative bonds हैं. So whenever we have four dative bonds, obviously the geometry is going to be tetrahedral or square planar. But मैंने आपको बताया था कि अगर four similar ligands होंगे तो tetrahedral. But when we have two different and two similar ligand in this scenario, it's going to be square planar. So square planar geometry is the right answer for this. Bidentate ligand always gives square planar geometry when we have two similar and two different monodentate ligands. Obviously geometry is square planar. Tetrahedral उस केस में आएगी जब आपके पास four similar ligands होंगे. याद रखना, ये situation अगर आपके पास है Ml4 in which we have four similar ligands, so this will give you tetrahedral geometry, not square planar. Okay. The complex chromium En3 2 plus exists as two stereoisomers, whereas the complex this exists as four stereoisomers. Complete the three-dimensional diagram to show four stereoisomers of this. Represents ligand by using this. Okay. So oxygen and nitrogen. Okay. इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है. So both of them gives lone pair. Both of them forms dative bond. So हम इसको इस तरह से बना सकते हैं. Oxygen and N. Okay. And oxygen and N. ये हो जाएगा oxygen and N. ये हो जाएगा आपके पास NO. और ये हो जाएगा आपके पास ON. ठीक है. ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो गए अगर आप नोट करें. ओके.
हम्म पोजीशन चेंज करके देखते हैं, आई थिंक सो। Let's suppose this one is going to be ON। यहाँ मैंने ON रखा है, अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं मतलब यहाँ O यहाँ N, ये हो जाएगा आपके पास। इसको भी फ्लिप कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा N, यहाँ हो जाएगा O, ये हो जाएगा आपके पास। अब इससे रिलेटेड हम मिरर इमेज बना लेते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं और ये भी दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ये टोटल चार स्टीरियो आइसोमर्स हैं, बिकॉज अरेंजमेंट्स मैंने डिफरेंट की हुई है वेजेस और पिरामिड्स के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट डी। ओके, that's a classic question, I believe. The complex is formed by reacting chromium 2 plus with the conjugate base of 2 amino ethanol. A synthesis of 2 amino ethanol is shown in figure 2.2. Okay, so ये कैसे हुआ है ये देखना है हमने। ये ऑक्सीरेन है, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करके 2 अमीनो इथेनॉल बना रहे। ओके, पार्ट वन suggests the mechanism for step 1 of the reaction of oxirane with ammonia. Include all relevant curly arrows, lone pairs of electrons, charges, and partial charges. Draw the structure of the organic intermediate. Okay, okay. First of all, we know if this oxygen is more electronegative element, so it has slight negative charge. This carbon, both these carbon has slight positive charge, right? So ammonia has a lone pair, which means it will acting as a nucleophile. If it acting as a nucleophile, obviously it's gonna give its lone pair to this electron deficient carbon. At the same time, ये bond इस oxygen पे shift होगा, and as a result, oxygen becomes negatively charged. So this is CH2. This is CH2, O minus, and obviously this is going to be NH3 plus. Why it's going to be positive? Because nitrogen has 4 bonds. Okay, so that's the intermediate. Now after that, what will happen? What will happen? हम इसको कुछ इस तरह से भी अरेंज करके लिख सकते हैं। देखिए, आपको बेहतर अंदाज से समझ में आ जाए, हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। गलत नहीं था वो, बट पूरी वर्किंग समझाने के लिए मैं आपको यहाँ लिख के दे रहा हूँ। दिस इज NH3 plus. Okay, now what's next is ये नेगेटिव इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, and so it will turn to OH. At the same time, hydrogen का electron will shift towards nitrogen atom, and as a result ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा और इस तरह से ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, दैट इज द होल मैकेनिज्म बिहाइंड दिस प्रोसेस। ऑलराइट, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। Part 2. A small amount of byproduct E shows in figure 2.4 is produced during the reaction shown in figure 2.2. Okay. Suggest how the formation of byproduct E can be minimized.
तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये बाय प्रोडक्ट बनी कैसे। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो प्रोडक्ट है इसने इस ऑक्सीरेन से दोबारा से रिएक्शन किया है। लेट मी गिव यू द मैकेनिज्म इन दिस। दोबारा से मैकेनिज्म देते हैं। लेट मी ट्राई द मैकेनिज्म। ओके, इट्स गोइंग टू बी टफ आई बिलीव, बट ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। CH2 ऑक्सीजन, CH2, we know it has slight negative, we know it has slight positive, और हम ये भी जानते हैं कि this has CH2, CH2OH. ओके, नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा एंड सो दैट ऑक्सीजन कैरीज नेगेटिव चार्ज। सो आपके पास CH2 आएगा, ये NH2 हो गया, वेट, जगह नहीं है हमारे पास, लेट मी ट्राई। CH2 हो गया, इस CH2 के साथ ये CH2 है, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये CH2, ये CH2 और ये OH एज इट इज रहेगा। ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है, अब ये इससे रिएक्शन करेगा और ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो इस नाइट्रोजन पे जाएगा और इस तरह से ये कन्वर्ट होगा कुछ इस तरह। ये हो जाएगा CH2OH, then we have CH2, then we have NH, after that we have CH2, then again CH2 and then OH. Okay, so ये वो स्ट्रक्चर है जो एग्जामिनर ने मुझे यहाँ दिया हुआ है। तो एग्जामिनर कह रहे हैं कि सजेस्ट हाउ द फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट ई कैन बी मिनिमाइज, यानी इसकी फॉर्मेशन को कैसे रोका जा सकता है। इसकी फॉर्मेशन को रोकने का तरीका ये है कि आप ऑक्सीडेंट को एक्सेस अमाउंट में यूज ना करो। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेंट के 2 मोल यूज हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ऑक्सीडेंट जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर है। सो ऑक्सीडेंट का एक्सेस अमाउंट यूज ना करें या इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे यूज कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं we can use oxirane in a limited amount, that is as a limiting reactant. Compound FC4H9NO can be formed from the reaction of byproduct EC4H11NO2 with concentrated H plus O. Compound F is a saturated and basic organic compound. Basic organic compound means लोन पर डोनर होगा, बेस होगा, सही है। सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम होंगे, can be formed from the reaction of byproduct. Okay, oh that's crazy. See guys, ये आपके पास है within the molecule reaction होगा in the presence of concentrated H2SO4 which acting as a catalyst or dehydrating agent भी कह सकता हूँ मैं इसको।
ये होगा कैसे जरा देखिए. This is CH2OH, CH2 and H. Okay, CH2OH, CH2NH, then CH2, CH2OH. Okay, then CH2, then CH2OH. So what we can do is कि यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, water. And since water is lost, इसका मतलब condensation reaction हो रहा है यहाँ. ठीक है. Whatever left, we need to write it. तो ये हो जाएगा CH2 oxygen. Then after that CH2. Then we have CH2. Then we have NH. Then we have CH2. And then this. So this is going to be the cyclic structure. अगर आप इसको बहुत तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको. This is NH. इस NH के साथ ये CH2 है, ये भी CH2 है. We have one more CH2. यहाँ पर भी एक और CH2 है. एंड ऑब्वियसली ये दोनों CH2 किससे अटैच हैं, ऑक्सीजन से. तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, डजंट मेक एनी डिफरेंस. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन एटम. हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं. 2 4 6 8 9 10 11. 11. यस. और NO2. एक नाइट्रोजन है और दो ऑक्सीजन एटम है. जब हमने ये स्ट्रक्चर बनाया तो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन एटम. लेट्स काउंट हाइड्रोजन. 2 4 6 8 9. वन नाइट्रोजन, वन ऑक्सीजन. तो यही तो कह रहे हैं, कंपाउंड एफ का स्ट्रक्चर मालूम करवा रहे हैं आपसे. तो हम इस स्ट्रक्चर को उठा के यहाँ कॉपी कर देते हैं. सही. टाइप ऑफ रिएक्शन, condensation because water is lost. Okay, that's the end of question number 2. All right, let's start question number 3. Aqueous acidified iodate 5 ions reacts with iodide ions as shown. This 5 means that iodine has plus 5 oxidation state in this ion. It's a redox reaction, by the way, because ये oxidizing agent होता है और ये reducing agent होता है. So हम यहाँ लिख देते हैं कि ये oxidizing agent है. And obviously it's going to be the reducing agent. And so it is a redox reaction. Okay. The initial rate of this reaction is investigated. Table shows the results obtained. Okay. हमें concentration of reactants given है with initial rate. We know the concentration of these two substances, but we need to calculate this one. And the initial rate is also given. The rate equation for this reaction is this. Okay, the rate equation is already given. With respect to iodate 5 ions, it is first order, whereas in दोनों का second order. Explain what is mean by the term order of reaction. But you guys, the power to which the concentration is raised
in rate equation, is called order of reaction. Okay, complete table 3.2, the order of reaction with respect to iodate 5 ions. मैंने आपसे कहा था कि जब कोई पावर नहीं होती तो फर्स्ट लिया जाता है. Since there is no power in the rate equation for IO3 minus, which means it's going to the first order. Now hydrogen ion has a square, which means it is second order. Iodide ion is also square on the rate equation, which means it is also second order. ये दोनों second order हो जाएंगे. So overall order अगर आपने निकालना है तो we need to sum all these three. So it's going to be fifth order. Okay. Use your answer to A2 to sketch lines in figure 3.1 to show the relationship between the initial rate and the concentration of these. IO3 minus and rate is a first order reaction, which means straight line graph passing through the origin. Oops. My bad. Yeah, that makes sense. And for iodide ion, since it is second order reaction, so when concentration is double, rate is quadruple, that means graph has to be like this. Okay. That's the simple strategy here. If concentration is doubled, rate is also doubled. And in this, if concentration is doubled, rate is quadruple or fourfold. Okay. On the basis of these two statements, many sketches dropped. Okay, use the data from the table 3.1 to calculate the rate constant for this reaction, include the units of K. Okay, let me write the rate equation first. Rate equals to K, concentration of IO3 minus concentration of hydrogen ion power square, concentration of iodide ion power square. That was the rate equation given in the question. इसको मैंने दोबारा से यहाँ लिखा है, ठीक है. Now we have in experiment one, we have all the values, so we need to plug in all these four values, and so we can find the value of K. The rate is 4.20 into 10 to the power minus 2, 4.20 into 10 to the power minus 2 equals to K, concentration of 0.0400, concentration of hydrogen ion is 0.0150. इसका स्क्वायर कर लेते हैं, and concentration of iodide ion is 0.0250. So value of K from here is going to be how much? Let me find out. I believe it's going to be 7.47 into 10 to the power 6. Now we need to find the units. Okay. तो रेट की यूनिट होती है मोल पर dm cube
सेकेंड इनवर्स, इसकी यूनिट होगी मोल पर डीएम क्यू। Because of square, it is mole square dm minus 6. Square mole square dm minus 6. So ये हो जाएगा मोल पर dm क्यूब सेकेंड इनवर्स इक्वल्स टू k। जब यूनिट्स मल्टीप्लाई हो तो पावर z हो जाती है, तो इट्स गोइंग टू बी मोल 5 माइनस 15। ओके, सो अगर मैं यहाँ से एक यूनिट निकालूं, ये हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल 5 dm minus 15. So it's going to be 1 upon mole 4 dm 12, और ये हो जाएगा फाइनल यूनिट। I believe I'm running out of space here. चलिए यहाँ लिखते हैं। सो ये सेकंड इनवर्स भी होगा ऑब्वियसली। ये हो जाएगा मोल इनवर्स 4 dm 12 second inverse, and the unit is going to be this, and value is 7.47 into 10 to the power 6. Let me check the value again, because वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए। 0.0250 पर स्क्वायर करें तो ये आ जाता है, इंटू 0.0150 इंटू 0.0150, ये आ गया आपके पास, इंटू 0.04, ये आ गया आपके पास। तो 4.20 to exponent -2 divided by answer. Yeah, 7.466, 7.47 10 to the power 6 is the right answer. Okay. That's the toughest question, I believe. Use data from the table 3.1 to calculate the concentration of hydrogen ions in experiment 2. So again, we need to write the rate equation, which is already given in the question. The rate equals to K, iO3 negative. Hydrogen ion has a square, iodide ion has also square. So we know in the second experiment, we know the rate value 7.09. 7.09 into 10 to the power -2. We have calculated the value of K, उसको हम यहाँ plug in कर देते हैं, 7.47 into 10 to the power 6. Concentration of iodate 5 in the second experiment is 0.120. This is going to be x square. And the concentration of iodine is 0.0125. इसको स्क्वायर कर लीजिए, तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास यहां से कितनी आएगी? लेट मी कैलकुलेट इट। सो ये आ रही है 2.25 into 10 to the power -2 mole per dm cube. It's 2.25 into 10 to the power -2. Let me check my calculation again. 0.0125 into 0.0125 into 0.120. That's the answer.
okay, into 7.46 exponent 6. That's the 7.09 exponent minus 2 divided by answer. Oops. My getting 7.47 exponent 6 into 0.12, okay, into 0.0125. ठीक है, 7.09 exponent minus 2 divided by answer. You get this. Under the answer, you will get. Yeah, that's fine. That's fine, guys. Okay. Now the next is this reaction is repeated in two separate experiments. The experiments are carried out at the same temperature and with the same concentration of iodide and IO3 negative. One experiment takes place at pH 1 and other experiment takes place at pH 2. Calculate the value of the rate of this. Okay. So first of all, pH 1 दी हुई है मुझे. मैं फॉर्मूला यूज करूंगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. सिंस हाइड्रोजन आयन हमें डिटरमाइन करना है क्योंकि पीएच गिवन है, तो ये हो जाएगा shift log minus 1 is going to be 10. No, shift log, ये हो जाएगा 0.1 mole per dm cube. Okay, similarly मुझे pH equals to minus log concentration of hydrogen ion लिया हुआ है. Since we have pH 2, तो pH 2 की वजह से हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? शिफ्ट log minus 2 is 0.01 mole per dm cube. So that's an important thing. The pH 1 थी concentration of hydrogen ion यही, the pH 2 थी concentration of hydrogen ion कम हो गई. ठीक है. We are comparing two rates. So मैं यहाँ लिख लेता हूँ rate at pH 1 equals to K concentration of IO3 negative, concentration of hydrogen ion power square, and concentration of iodide ions power square over rate at pH 2 equals to K IO3 negative hydrogen ion per square and iodide ions per square, right? Now, examiner is saying that the same concentration of iodide and IO3 negative ions are used, which means मैं इनको cancel out कर दूंगा. Now, मुझे हाइड्रोजन आयन की concentration for experiment 1 मालूम है. So ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर ओवर. मुझे इस सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम है 0.01 इसका स्क्वायर. So 0.1 the square is 0.01 और 0.01 का स्क्वायर is 1 into 10 to the power minus 4. So 0.01 divided by answer is going to be 100. So यहाँ मैं लिखूंगा 100. Okay. B part. In aqueous solution, iron 3 ions reacts with iodide ions as shown. The initial rate of reaction is first order with respect to Fe3 plus. That's a very important information. First order with respect to Fe3 plus and second order with respect to iodide ions.
इसका मतलब इसके 2 मोल्स यूज होंगे आयोडाइड आयंस के, Fe3+ आयन का 1 मोल यूज होगा, राइट? The mechanism for this reaction has 3 steps. Okay, each step involves two ions reacting together. That's also very important statement. Suggest equations for the 3 step of this mechanism and identify the rate determining the step. Okay, so Fe3+ ions has one first order or iodide ion is second order. मुझे ओवरऑल इक्वेशन ये कंस्ट्रक्ट करनी है, और इसमें 2 मोल्स हैं, इसमें भी 2 मोल्स हैं, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ Fe3+ प्लस iodide ions कन्वर्टिंग इनटू Fei2+, ठीक है। कैसे 2+ लिखा मैंने, देखो यहाँ चार्ज है 3+ और यहाँ चार्ज है -1, सो यहाँ ओवरऑल चार्ज है 2+, तो यहाँ पर भी ओवरऑल चार्ज कितना हो गया 2+। इसके बाद Fe2+ is again reacting with iodide ions converting into iron 2 ions plus iodine, तो मेरे पास आयोडीन आ गया और मेरे पास ये Fe2+ आयंस भी आ गए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज Fe3+ नो नो नो, चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा, यहाँ 2+, यहाँ -1, तो यहाँ +1 है और यहाँ 2+ है, तो +1 करने के लिए यहाँ पर माइनस का चार्ज। ओके, सो ये हो जाएगा I2 माइनस, you will get what, I2 negative plus Fe2+। ओके, सो आप नोट करें हर उसमें मैंने 2 आयंस जो हैं वो इक्वेट रिएक्शन करवाए हैं, लेकिन इसमें से ओवरऑल स्टेप्स का ऑर्डर क्या होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, सो आपके पास ओवरऑल इक्वेशन में क्या आएगा, ये 2 मोल्स हो जाएंगे, ये भी 2 मोल्स हो जाएंगे, ये Fe2+ 2 मोल्स हो जाएंगे, और ये I2 होगा, आई थिंक यहाँ नेगेटिव साइन नहीं होगा। ओके, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं हो सकता, लेट मी चेक अगेन, 3+ एंड -1 2+, यहाँ पर 2+, सही है, यहाँ 0 होगा। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। देखिए आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू Fe3+, और सेकेंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू I-, तो मेरे ख्याल से स्टेप 1 जो है वो आपका स्लोएस्ट स्टेप है, क्योंकि उसमें Fe3+ जो है वो आपके पास आ रहा है। नो, दोबारा से देखें, ये दोनों कैंसिल होंगे और फिर ये दोनों भी कैंसिल होंगे, सो आपके पास ओवरऑल इक्वेशन बन रही है 2Fe3+ प्लस 2I नेगेटिव एरो I2 प्लस 2Fe2+। ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो मुझे एग्जामिनर ने दी थी, ये मैंने बना के दिखा दिया आपको, इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही मैकेनिज्म की वर्किंग की हुई है, नंबर 1। नंबर 2, आप नोट करें ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका रिएक्टेंट है, इसका मतलब ये आपका इंटरमीडिएट है, तो अगर मैं सिर्फ इन 2 इक्वेशंस को मर्ज कर लूँ, सिर्फ इन 2 इक्वेशंस को, तो आप नोट करें ये 2 इक्वेशंस की मर्जिंग से ये कैंसिल होगा, तो आपके पास बनेगा Fe3+ प्लस 2I नेगेटिव एरो Fe2+ प्लस I2, राइट। आप नोट करें ये आपका स्लो स्टेप होगा, क्योंकि इस स्लो स्टेप में ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये सेकंड ऑर्डर आ रहा है, तो इसका मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 मिलाकर जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप बनेगा। सो बोथ
करके मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, combination of step 1 and 2 सही है, is going to be the slow step, क्योंकि उसमें जो इंफॉर्मेशन गिवन थी हमें कि विद रिस्पेक्ट टू Fe3+ वो फर्स्ट ऑर्डर है, और विद रिस्पेक्ट टू आयोडाइंस वो सेकंड ऑर्डर है, ये सिर्फ इन दो इक्वेशंस को मर्ज करके मुझे मिल रही है, इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप 1 and 2 लिख सकते हैं, तभी जाके मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता. That's the end of question number 3, guys. So, guys, let's start question number 4. This question belongs to organic, I believe. State the hybridization of the carbon atoms. So, each carbon in benzene is sp2 hybridized, and also he's asking the bond angle, okay? So, each carbon in benzene is sp2 hybridized with an angle of 120 degree. Examiner is asking about how orbital overlap leads to the formation of a sigma and a pi bond in benzene. So always remember, sigma bond is always formed through head-to-head overlapping of orbital, while pi bond is formed through sidewise or lateral overlapping of p orbital. Through sidewise overlapping of p orbital. Okay, compound Z can be synthesized from benzene in 3 steps by the route shown in figure 4.1. So your organic synthesis है. Draw structure of X and Y in figure 4.1. Okay. First of all, look, the product is this, and this product has two groups, NH2 and this alkyl group. आप सब जानते हैं कि अल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ उस वक्त अटैच होता है जब हम बेंजीन में अल्काइलेशन करें. ऑलराइट, तो इसका मतलब स्टेप 1 इज गोइंग टू बी अल्काइलेशन, जिसको हम फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी कहते हैं. एंड ऑब्वियसली ये आपका अल्काइल ग्रुप है. सो अल्काइल ग्रुप हम उस वक्त अटैच करते हैं जब हम अल्काइल हैलाइड एज अ रिएजेंट यूज करें. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्रुप मैं रिएजेंट डिसाइड कर सकता हूं. दिस रिएजेंट इज गोइंग टू बी CH3 taken to CH, और अल्काइल हैलाइड के लिए वी नीड हैलोजन, सो आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, इट्स टोटली अप टू यू. सो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी द अल्काइलेशन, एंड फ्रॉम दैट I can introduce an alkyl group into the benzene ring, and the alkyl group is going to be CH and then CH3. Okay, and obviously आप इसमें AlCl3 anhydrous को as a catalyst भी use करेंगे. First thing. Second thing, आप जानते हैं कि NH2 कभी भी बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता है. NH2 उस वक्त अटैच होता है जब बेंजीन में आप NO2 को इंट्रोड्यूस करें. तो NO2 के लिए हम नाइट्रेशन का प्रोसेस करेंगे. इसका मतलब स्टेप 2 is going to be the nitration, and for that I will use concentrated H2SO4 and
concentrated nitric acid for the reaction. Okay, so ये बेंजीन रिंग है, ये आपका अल्काइल ग्रुप हो गया है। नाउ आई नीड टू अटैच NO2 ग्रुप। अब वो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे, ये डिसाइड करना है। तो आप सब जानते हैं ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इसका मतलब पैरा के ऊपर NO2 को अटैच करेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो भी, उसमें NH2 भी पैरा पोजीशन पे ही अटैच हुआ है। सही है। नाउ इन स्टेप 3 आप नोट करें, ये NO2 इस NH2 में कन्वर्ट होता है, एंड अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर इसको हम रिडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। और इस कन्वर्जन के लिए 10 concentrated HCl is used as a reagent. Reflux is the condition. एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं स्टेप 1, तो स्टेप 1 में रिएजेंट आपके पास होगा CH3 taken to CHCl in the presence of anhydrous AlCl3 as a catalyst. Step 2 में concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid का mixture. ओके, एंड स्टेप 3 के अंदर हमारे पास है 10 concentrated HCl is basically the reagent and reflux is basically the condition. Okay, okay. Next, compound C. Compound W is an isomer of Z. Give the systematic name of W. So भाई सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। आप सब जानते हैं कि ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ के ऊपर मिथाइल, तो ये हो जाएगा 3,4,5 डैश ट्राई मिथाइल। बेंजीन को हम फिनाइल कहते हैं जब एक से ज्यादा कार्बन एटम होते हैं, और NH2 को हम एमाइन कहते हैं। सो आई बिलीव इसका नाम हो जाएगा 3,4,5 डैश ट्राई मिथाइल फिनाइल एमाइन। वैसे बाय द वे इस पूरे कंपाउंड को एनिलीन भी कहते हैं, तो आप इसका नाम हो सकता है 3,4,5 ट्राई मिथाइल एनिलीन। बट वो क्योंकि आपसे सिस्टमैटिक नेम पूछ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर फिनाइलमाइन लिखेंगे, एनिलीन नहीं लिखेंगे। ठीक है। Next is complete table 4.1 to show the number of peaks observed in carbon 13 NMR spectrum of for W and Z. For W and Z, for W and Z, तो देखें एक आपके पास ये हो गया, ये आपकी सेकेंड एनवायरनमेंट, ये आपका थर्ड एनवायरनमेंट, ये आपका फोर्थ एनवायरनमेंट, and this one is fifth environment. So total we have how many peaks? 5 peaks. 1, 2, 3, 4, 5, 6 peaks हो गए ना, ये हो गया ना, 1, 2, 3, 4. Oh my goodness, this one is left. कलर कौन सा यूज करूं मैं अब? ओके, कलर हम ये वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी ये भी पीक हो गई, तो टोटल 6 पीक्स हो गई। किसमें? डब्ल्यू में। लेट्स टॉक अबाउट जी। जी के लिए देख लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, एंड दिस वन इज सिक्स, ये भी सिक्स हो जाएगा। So that's the end of question number 4. So guys, let's start question number 5. The exhaust system of most modern gasoline fueled car contain a catalytic converter with 3 metal catalysts. Catalytic converter अगर आपको याद हो, हमने A1 केमिस्ट्री में पढ़ाया था। मैं उसकी डायग्राम थोड़ी सी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ।
जगह नहीं है हमारे पास, तो व्हाट वी कैन डू इज यहाँ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये हो, ये हमारा कैटलाइटिक कन्वर्टर था। इसमें ये हनी कोम शेप का गॉज लगा हुआ होता है, और इस हनीकेम शेप के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट कैटलिस्ट हो सकते हैं। प्लैटिनम भी होता है, अगर आपको याद हो, रोडियम भी होता है, और पलेडियम भी हो सकता है। हम यहाँ से ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन और नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस करते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, और नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। Okay, that was the catalytic converter in AS. So examiner is asking, these metal acts as a heterogeneous catalyst. Now heterogeneous catalyst क्या होते हैं? When reactants and catalyst exist in different physical state. Okay. Now the next part is name 3 metal catalysts used in catalytic converter. तो एक आपके पास होगा प्लैटिनम, देन फिर आपके पास है रोडियम, एंड देन palladium. Next is what is mean by the term heterogeneous catalyst. So when reactants and catalyst exist in different physical state. All right. Okay. The exhaust system of many diesel-fueled car contain an additional system to reduce vehicle emissions. This uses a liquid that is added to the exhaust system. This liquid contains urea, which decomposes on heating to isocyanic acid. Isocyanic acid का I believe structure ये होना चाहिए, ठीक है, एन अमोनिया। तो ये आपका यूरिया है, और ये कन्वर्ट हो रहा है आइसोसाइनिक एसिड और अमोनिया में। आइसोसाइनिक एसिड रिएक्ट्स विद वाटर वेपर टू फॉर्म अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गई। सम वैल्यूज फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी आर गिवन इन टेबल दिस। ओके, ये एंट्रोपी की वैल्यूज गिवन है हमें। व्हाट इज मीन बाय द टर्म एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम? डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। हम यहाँ लिख सकते हैं, इट इज अ मेजर of the disorderness of the system is called entropy. Next, use the data in table 5.1 to calculate the value of delta G naught for reaction 2 at 25 degrees Celsius. So temperature is given 25 degrees Celsius. That means मैं इस temperature को Kelvin में convert करूंगा,
सो मैं बेसिकली 25 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करूंगा, सो आई विल गेट 298 केल्विन। सो ये मेरा टेम्परेचर आ गया। ये डेल्टा जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट आर minus T delta S naught. All right, the issue is we don't have a value of delta HR, we don't have a value of delta S naught. इसका मतलब ये हुआ कि इस टेबल को यूज करके मैं डेल्टा एच आर और डेल्टा एस नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस नॉट system which has summation of standard entropy of product minus summation of standard entropy of reactant. So रिएक्शन 2 के लिए बात कर रहे हैं एग्जामिनर से, ठीक है, ये याद रखिएगा। रिएक्शन 2 के लिए बात करें, अगर वो रिएक्शन 2 के लिए बात कर रहे हैं तो रिएक्शन 2 में हमारे पास अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सो अमोनिया इज प्लस 192.8 and plus 213.8, 192.8 plus 213.8, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। लेट्स टॉक अबाउट रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हमारे पास HNCO है प्लस 238.2 प्लस 188.8। तो यहां से डेल्टा एस नॉट सिस्टम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -20.4 जूल्स मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। ओके, एंड ऑब्वियसली अब मुझे डेल्टा एच नॉट आर फाइंड आउट करना है, तो मैं डेल्टा एच नॉट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ठीक है ठीक है, HNCO प्लस वाटर, ये डेल्टा एच आर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम इसकी, और आपको मिल क्या रहा है यहाँ से? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि फॉर्मेशन का डेटा गिवन है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से स्टार्ट होगी एसिडोसाइक्लिक। ठीक है जी। ओके, HNCO की वैल्यू कितनी है? -101.7। वाटर की वैल्यू है -241.8। अमोनिया की वैल्यू है हमारे पास -45.9 एंड कार्बन डाइऑक्साइड की गाइस वैल्यू है हमारे पास -393.5, -393.5, -45.9। ठीक है जी, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो बना देते हैं। ये सारी वैल्यूज प्लस ये दोनों वैल्यूज माइनस इक्वल्स टू 0, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। लेट मी अरेंज द वैल्यूज। डेल्टा एच आर प्लस -101.7 प्लस -241.8 माइनस -45.9 माइनस -393.5
equals to 0, let me find out the value of this. So value is going to be minus 95.9 kilojoules per mole. Okay. Now I have to find out the value of delta G naught by using this expression. So we need to plug in the values in this. So you get a delta G naught equals to delta H naught R minus D delta S naught system. डेल्टा जी नॉट डेल्टा एच नॉट आर की वैल्यू है मेरे पास -95.9 माइनस टेम्परेचर है मेरे पास 298 केल्विन डेल्टा एस नॉट की वैल्यू है मेरे पास -20.4 मैं उस जाहिर सी बात है वो जूल्स के अंदर है मैंने उसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है सो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर देता हूँ सही है क्योंकि ये वैल्यू भी आपके पास किलो जूल्स में है तो इस वैल्यू को भी किलो जूल्स में होना चाहिए इसलिए 1000 से डिवाइड कर दिया है सो आंसर हम फाइंड आउट करते हैं इसका सो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -89.8 किलो जूल्स पर मोल okay my goodness the ammonia formed in reaction 1-2 can be used to remove nitrogen dioxide from exhaust emission as shown okay ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई use the equations for reaction 1 2 and 3 to construct an overall equation for the reduction of NO2 by urea okay that seems tricky hmm. तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं अपने पास ये वाली यूरिया से आइसोसाइनिक एसिड बन रहा है NH2 taken to CO is converting into HNCO that is isocyanic acid and ammonia ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है फिर सेकंड इक्वेशन को भी देख लेते हैं HNCO ये वाटर से रिएक्शन कर रहा है कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है अमोनिया प्लस 6NO2 then 7N2 प्लस 12H2 तो ये तीन इक्वेशंस हैं और मुझे ओवरऑल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए कह रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 4 से तो जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एच एन सी ओ भी क्या हो जाएंगे 4 एच एन सी ओ 4 हो जाएंगे तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ठीक है अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस इक्वेशन को अभी हटा देता हूँ अभी इन दोनों को मर्ज करता हूँ ठीक है और मैं यहाँ से इसको भी हटा लेता हूँ एक मिनट तो ये हो जाएगा आपके पास कैंसिल चाहिए जनाब
तो हमारे पास आंसर आएगा 4 NH2 taken to CO plus 4H2O arrow 4NH3 plus 4CO2। अच्छा, ये 4 + 4 8HNO3 हो जाएंगे। ओके, 8HNO3। ओ 8NH3, सॉरी 8NH3। तो मैंने फर्स्ट टू इक्वेशंस को कंबाइन किया। अब हम क्या करते हैं, हमने जो ये ओवरऑल इक्वेशन दी है 4NH2 taken to CO plus 4H2O arrow 8NH3 plus 4CO2, ये लिया ना हमने। तो हम क्या करते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन से लिंक कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 8NH3 plus 6NO2 arrow 7N2 plus 12H2O। 8NH3 8NH3 से कैंसिल, 4H2O 12H2O से कैंसिल। The final equation is going to be what? 4NH2 taken to CO plus 6NO2 arrow 7N2 plus 4 कैंसिल हो गए तो 8H2O left, and that's my answer। ठीक है, that's very 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 tricky। वो 4 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सॉरी। ओह माय गुडनेस, ये रह गया ना 4 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आएगा। यहाँ से 8 वाटर मॉलिक्यूल रह जाएंगे, ये भी आएगा। यहाँ से 7 8। दैट्स माय आंसर। दैट्स ट्रिकी, नॉट इजी। अच्छा, मुझे पता कैसे चला कि मुझे बेसिकली इन दो इक्वेशंस को 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर मेरे पास 8 मोल्स ऑफ अमोनिया है। तो 8 मोल्स ऑफ अमोनिया मैं उसी वक्त लेकर आ सकता था ओवरऑल इक्वेशन में, जब मैं इन दोनों इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता। जब अमोनिया कैंसिल आउट होंगे तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आएगी ना। तो मैंने इसलिए इस इक्वेशन को भी 4 से मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट टोटल अमोनिया मेरे पास यहाँ पर कितने आ जाए, 8, क्योंकि यहाँ पर भी 8 थे। ठीक है, नेक्स्ट। दैट्स ट्रिकी गाइस, नॉट एन इजी पार्ट। Isocyanic acid can form cyanuric acid under certain conditions. Cyanuric acid is a cyclic structure containing alternating carbon nitrogen atom in the ring system. So basically I need to make the ring, और ऑल्टरनेट कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम का सिस्टम है। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, सच एज द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोरिक एसिड, और वो आइसोसाइनिक एसिड से बन रहा है। और आइसोसाइनिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिया था, कहाँ बनाया था, ये रहा। सो इस स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। सिंस वी हैव 3 कार्बन एटम्स, आप नोट कर रहे हैं, वी हैव 3 कार्बन एटम। एक नोट करो बात, वी हैव 1 नाइट्रोजन, वी हैव 1 कार्बन एंड वी हैव 1 ऑक्सीजन, राइट? ओवर हियर वी हैव 3 कार्बन, वी हैव 3 नाइट्रोजन, वी हैव 3 ऑक्सीजन। इसका मतलब इसके 3 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। सो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आइसोसाइनिक एसिड undergoes reaction to give this compound। तो भाई आइसोसाइनिक एसिड का एक मॉलिक्यूल इस तरह से लिख लेते हैं हम, HNCO। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल हम इस तरह से लिख लेते हैं, CONH। और तीसरा मॉलिक्यूल जो है वो हम इस तरह से लिख लेते हैं, CONH। सही है भाई। तो अब क्या होगा, अब होगा ये,
कि ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। सो बेसिकली ये हो जाएगा एन एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा एन एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, फिर आपके पास से एन एच सी डबल बॉन्ड ओ और ये सिंगल बॉन्ड यहां आ जाएगा। सो दैट्स द साइक्लिक स्ट्रक्चर गाइस। तो देखें, ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, और इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 नाइट्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 ऑक्सीजन, ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज isocyanuric acid is a weak acid. Okay, the pK value of isocyanuric acid is given. If pK value is given, then it means I need to find the Ka value from this. pK equals to minus log Ka. pK value is given 3.70. So मैं यहाँ से Ka की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, शिफ्ट log minus 3.0, shift log minus 3.70. Oh, shift log minus 3.70 is going to be 1.995 into 10 to the power minus 4 mole per dm cube. ठीक है, ये आ गई मेरे पास Ka की वैल्यू। अब द नेक्स्ट इशू इज write mathematical expression for pK and pH. So pKa equals to minus log Ka, whereas pH is equals to minus log concentration of hydrogen ion. Easy task. Calculate the pH of 0.12 mole per dm cube isocyanic acid. Give your answer 3 significant figures. यार ये 3 significant figures याद रखना है क्योंकि ये हम अक्सर भूल जाते हैं। Since we आइसोसाइनिक एसिड इज अ वीक एसिड उसने लिख दिया है, तो किसी भी वीक एसिड की अगर आपको पीएच कैलकुलेट करनी हो तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग अंडर रूट के ए टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड माइनस लॉग अंडर रूट के की वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है 1.995 into 10 to the power minus 4. Concentration of isocyanic acid is given, which is 0.120. So यहाँ से pH की वैल्यू आ जाएगी, pH एक मिनट, multiply by 0.120 under root minus log, so it's going to be 2.31. 3 significance figure कह रहे हैं तो हमने 2.31 लिखा है। Calculate the percentage of isocyanic acid molecule that are ionized in 0.123. Since we have calculated pH, तो मैं इस pH को यूज करता हूँ, फॉर्मूला यूज करता हूँ और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालता हूँ। तो ये हो जाएगा 2.31 इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये हो जाएगा एंटी लॉग which is also called log inverse minus 2.31 equals to concentration of hydrogen ion. Let me find out this. ये हो जाएगा shift log minus answer
It's going to be 4.83 into 838 838 into 10 to the power minus 3 मोल पर डीएम क्यूब. सो अगर मुझे परसेंटेज आयनाइजेशन फाइंड आउट करनी है तो इस पीएच के अंदर जो इस कॉन्सेंट्रेशन से जो पीएच मुझे मिली थी वो 2.31 थी, उसमें इतने हाइड्रोजन आयंस थे जो आयनाइज हो रहे थे. 2.838 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास है 0.120 इंटू 100 करूंगा. सो डिवाइडेड बाय 0.120 इंटू 100. oops 4.383 exponent minus 4 divided by 0.12 into 100. So basically मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो oh my goodness, my bad. This is not -4, this is -3. Guys, you have to be very careful. Okay, let me check it again. 4.838 exponent minus 3 divided by 0.12 into 100. So it's going to be 4.03 to 4.03. Okay. So that's the end of question number 5. So guys, let's start question number 6. Compound H has a structural formula. Name all the functional groups in H. Okay. So first of all, it is alkene. Then we have amine. And last but not the least, we have carboxylic acid. तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये आपका सेकेंडरी अमाइन है. Okay. Compound H exhibit stereoisomerism. Draw three-dimensional structure for the two stereoisomers of H. Name this type of stereoisomerism. आप जान सकते हैं कि ये जो कार्बन है आपके पास, this carbon is basically the chiral carbon atom. तो जब chiral carbon होगी तो जाहिर सी बात है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा. और जाहिर सी बात है जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है तो हम मिरर इमेजेस लेते हैं 3D शेप में, क्योंकि वो क्या भी रहे हमसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. सो हम पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर, ये डॉटेड लाइन स्लाइटली स्लाइन करके पिरामिड, ये आ गया. ठीक है. अब इसका मिरर इमेज बनाना है तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ बनाएंगे और ये हो जाएगा आपके पास दिस वन. ठीक. अब जाहिर सी बात है आपके पास CWH है तो आप इस तरह से लिख दीजिए CWH. आपके पास NH2 है, आप इस तरह से लिख दीजिए. आपके पास CH है, आप इस तरह से लिख दीजिए. आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2 है, आप इस तरह से लिख दीजिए. आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो आप फ्लिप कर दीजिए इसको COOH. ये हो जाएगा आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2, राइट. दिस H will remain as it is in this NH2. अच्छा, ये
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये ग्रुप्स अटैच करने के रूल्स होते हैं, राइट? उसको कहते हैं रेक्टर मॉडल, आरएस कहते हैं इसको, और उससे हम डिटरमिन कर सकते हैं कि विच वन इज डेक्स्ट्रो एंड विच वन इज लेवो रोटेटरी। बट A2 स्टैंडर्ड पे या इस स्टैंडर्ड पे ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती है, ना डिस्कस की जाती हैं, विच इज वाई ये जो ग्रुप्स हैं ये आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? सो डू नॉट गो फॉर द मार्किंग स्कीम इन सच सिनेरियो, कि आप वहीं पर लगाएं जहां मार्किंग स्कीम में अटैच किया हुआ एग्जाम में, ठीक है? तो वो जरूरी नहीं होता। Compound H can be prepared from the reaction of J with an excess of hot aqueous acid. अगर hot aqueous acid है तो और excess amount के अंदर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ हम बेसिकली हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो आप नोट करें, दिस इज योर एस्टर, हाइड्रोलाइज होगा ये भी, दिस इज योर एमाइड, ये भी हाइड्रोलाइज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बॉन्ड यहाँ से भी ब्रेक करूंगा, मैं बॉन्ड यहाँ से भी ब्रेक करूंगा, ये ऑब्वियसली ये है, ये है, ये है, और ये है एक, और ये, ठीक है? चलें, ये हाइड्रोजन ऑफ वाटर लेगा हाइड्रोलिसिस की वजह से, और ये हासिल करेगा CO ऑफ वाटर, जबकि ये हाइड्रोजन ऑफ वाटर लेगा और ये CO ऑफ वाटर। सो मैं इतने सेगमेंट को लिख कर दिखा रहा हूं, इतना सेगमेंट लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है? ओके, ये इतना सेगमेंट लिख के दिखाते हैं। चलो देखिए, यहाँ से दो चीजें बन सकती हैं हाइड्रोलिसिस से, जो मुझे नजर आ रहा है। ये CO है, तो जब OH ऑफ, माय गुडनेस, दिस इज OH ऑफ वाटर गाइस, ouch, ouch, my bad, this is not CO is getting is basically the OH of water, okay? तो ये हो जाएगा आपके पास CO, और ये एग्जामिनर ने OH ऑफ वाटर लिया, देन वी हैव CH2 एंड देन वी हैव OH, ठीक है जी? हमने ये लिख के दिखाया आपको, ये आ गया। और अब ये लिख के दिखा देते हैं, ये है आपके पास डबल बॉन्ड, दिस इज गोइंग टू बी योर NH2, दिस इज CO एंड ऑब्वियसली OH, ठीक है? और क्योंकि ये भी स्केलेटल है तो यार हम इसको भी स्केलेटल में ही लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? एग्जामिनर बुरा ना माने हमसे, ठीक है ना? सो ये हो जाएगा CO, COOH, this is CH2 and this is OH, okay? सो बेसिकली मैंने दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं यहाँ पर। एक स्ट्रक्चर ये है जिसको मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है जिसको मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? वो कह रहे हैं कंप्लीट फिगर 6.2 टू शो द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो भाई हम वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं, हमने एक प्रोडक्ट बना ली है, हमारी दूसरी प्रोडक्ट जो है वो ये थी, हम इसको लिख देते हैं COOH CH2 OH, okay? I hope it makes sense to you. Name the type of reaction, and type of reaction is basically hydrolysis, क्योंकि मैंने amide को भी हाइड्रोलिसिस किया है, मैंने एस्टर की भी हाइड्रोलिसिस की है। Next, polymers consist of monomers joined together by undergoing either addition or condensation polymerization. Compound H can react to form an addition polymer K or a condensation polymer L depending on the condition.
ड्रॉ वन रिपीटिंग यूनिट ऑफ एडिशन पॉलीमर के। एच से के बनाना है मैंने, सो एच इज बेसिकली दिस। सो मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन के साथ टू हाइड्रोजन है, ऐसा ही है, यस। और इस कार्बन के साथ एक एच है और दूसरा सी एच NH2 और COH। तो अगर मुझे इस, और वो मुझसे कह रहे हैं वन रिपीटिंग यूनिट, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, ये जो बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट करूंगा और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट करूंगा, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो वो वन रिपीटिंग यूनिट कह रहा है इसलिए एन नहीं लगा रहा हूं मैं। So in the next part, that is in C part 2, examiner is asking draw two repeating units of the condensation polymer L. The new functional group formed should be displayed. So sorry, first of all, we need the two repeating units, and second thing, the functional groups needs to be displayed. Okay, so हमारे पास ये है और हमने इससे related बना के देना है एग्जामिनर को। So जाहिर सी बात है NH बॉन्ड कंटिन्यूएशन करेगा, ये सी एच एज इट इज रहेगा, इस सी एच के साथ सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू भी एज इट इज रहेगा, देन वी हैव सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन एन एच। ओके, एन एच, इस एन एच के बाद वापस आपके पास सी एच आएगा, इस सी एच के साथ सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है, फिर ये सी ओ होगा एंड ऑब्वियसली ये एन एच के साथ कंबाइन होगा। तो ये आपका बेसिकली टू रिपीटिंग यूनिट्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, ओके, मतलब आप ये समझ लीजिए कि हम कुछ इस तरह से रिएक्शन करवा रहे होंगे इसमें। इसको अगर हम थोड़ा सा एनालाइज और कर लें, सो बेसिकली ये होगा मेरे पास NH2, देन CH, then CH double bond CH2, and then we have COOH plus, हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, NH2 फिर CH फिर CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर ये होगा आपके पास COH। ठीक है, एंड गाइस मैं इस NH2 को ओपन करके लिख देता हूँ अपनी आसानी के लिए, आपको बात समझाने के लिए। सही है ना, अब जरा नोट कीजिएगा, यहाँ से OH, ठीक है, इसको भी हटाइए, यहाँ से OH, यहाँ से H, दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर। तो इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस पेप्टाइड बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से OH जा रहा है तो यहाँ से भी OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, तो ये आपके पास कंटिन्यूएशन ये आ जाएगी। सही है, तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ, ये इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। तो ये आपके टू रिपीटिंग यूनिट्स मेंशन हो गए। ठीक है जनाब, एक्सप्लेन व्हाई कंडेंसेशन पॉलीमर्स कैन नॉर्मली बायोडिग्रेडेबल मोर रेडली देन एडिशन पॉलीमर। तो भाई आपको तो पता है कि जितने कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज condensation polymers
can easily hydrolyze with water. Okay, so that's the end of question number 6. Let's start question number 7, guys. State the relative basicities of ethanamide, diethylamine, and ethylamine in aqueous solution. Explain your answer. So इसमें जो most basic है वो diethylamine होगा, उससे कम जो है वो ethylamine, और सबसे लीस्ट बेसिक होगा इथेनामाइड. इथेनामाइड अगर आपको याद हो ये होता है, ये होता है इथेनामाइड. अब होता क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर देता है, एट द सेम टाइम पाई बॉन्ड्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि ये CH3 एज इट इज, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव एज इट इज, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ NH2 हो जाता है, और ये प्लस. और अब क्या होता है कि ये नेगेटिव यहाँ पर बॉन्ड बनाता है और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है. इसका मतलब this lone pair is delocalized with the pi bond of the oxygen atom. Hence, this lone pair is not easily available for the protonation, which is why it is least basic. तो पहला तो हम पॉइंट ये लिख देते हैं. Lone pair of nitrogen is delocalized with the pi bond of oxygen so lone pair is not available for protonation. Hence, ethanamide is least basic. Okay. Then फिर हमारे पास diethylamine has a stronger positive inductive effect than ethylamine. So diethylamine has a stronger positive inductive effect than ethylamine. So protonation takes place very easily because lone pair is easily available for protonation. Thus, diethylamine
is most basic. The amino acid alanine acts as a buffer. Define the buffer solution. A solution which maintain its pH fairly constant even upon the addition of small amount of acid or algae. Write two equations to show how an aqueous solution of alanine can act as a buffer. Okay, aqueous solution of alanine. So ये हो जाएगा आपके पास NH2 CH CH3 and then COH. और अगर आपने इसको बफर से मैच करना है तो आप ऑब्वियसली OH नेगेटिव आयन से सबसे पहले रिएक्शन करवा लें. ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 as it is, CH as it is, CH3 as it is, एंड ये प्रोटोनेट डोनेट करके हो जाएगा सॉल्ट में और ये वाटर में. ओके, लेकिन अगर मैं एलानिन को एसिड से रिएक्शन करवाऊंगा तो ये COH as it is, ये CH3 as it is और ये NH2. सही है. इसको हमने हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करवाया तो प्रोटोनेशन होगी. ये COH will remain as it is, CH3 will remain as it is और NH2 will turn to NH3 plus. ठीक. सो एक ही चीज लिखी हुई है, ये मैंने इस तरह से लिखा है और इसको मैंने फ्लिप करके इस तरह से लिख दिया. ठीक है, एक ही चीज लिखी हुई है बेटा, कोई चेंज नहीं है इसमें. ग्लूटामिक एसिड is another amino acid that acts as a buffer. Draw the skeletal formula for glutamic acid. Okay. लेकिन भाई सबसे पहली तो बात ये है कि आपके पास COOH है. सही है. उसके बाद आपके पास CH है, इस CH के साथ NH2 है, इस CH के साथ CH2 है, फिर CH2 है और फिर COOH. ओके, तो ये COH है, ये आया. ये CH2 है, ये दोनों आए. ये CH है, ये आया. इसके साथ ये NH2 लगा, ये अटैच हुआ और ये COH है, ये आ गया. ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर for the dipeptide ala glue formed from one molecule of alanine and one molecule of glutamic acid. याद रखिएगा कि मुझे one molecule of alanine लेना है और one molecule of glutamic acid लेना है. The peptide bond formed should be displayed. Okay. Okay. All right. All right. क्योंकि हमने स्केलेटल फॉर्मूला बनाया ग्लूटामिक एसिड का, तो इसका मतलब मैं एलानिन और ग्लूटामिक एसिड दोनों को रिएक्शन करवा सकता हूँ. दोनों को रिएक्शन करके मल्टीपल स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं. कैसे, मैं बता देता हूँ. ये देखो, ये एलानिन है, NH2 CH CH3 COH. ये एलानिन हो गया आपका, इसको एलानिन बोलेंगे, एला. और ग्लूटामिक एसिड ये है NH2 CH COH CH2 taken 2 and then COH. तो पॉसिबिलिटीज दो हैं. पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये COH और ये NH2 आपस में रिएक्शन कर रहे हैं. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है
कि ये NH2 और ये COH आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो आप दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी लेंगे, वो आंसर तो करेक्ट ही कंसिडर करेगा ना। ऑल राइट, बिकॉज वी आर टेकिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ बोथ द अमीनो एसिड। सो मैं यहां लिख लेता हूं NH2CH COOH, और ये हो जाएगा CH3 प्लस, ये हो जाएगा आपके पास NH2, then we have CH, then we have COH, and then CH2 taken to COH. So what I was saying कि यहाँ से OH, यहाँ से H चले जाएं, और इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर बन जाए। So this is going to be NH2CH CH3CONH पेप्टाइड मैंने डिस्क्रीट फॉर्म में लिख दिया जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट थी। ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा COH, CH2 taken to COH। ओके, आप चाहें तो इसको स्केलेटल की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेरी पहली पॉसिबिलिटी थी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लें। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसको अरेंज करना पड़ेगा मुझे, तो मैं अरेंज करके लिखता हूँ। ये हो जाएगा COOH, देन CH, देन CH3, एंड देन NH2 प्लस। इसको मैंने रिवर्स करके लिखा है। ठीक है, अब ये वाला COH जो है वो मैं NH2 के ऑपोजिट लेकर आऊँ। उसके बाद है आपके पास CH2 taken to, then CH, इस CH के साथ NH2 और COH। तो भाई अब क्या होगा? अब सिनेरियो ये है कि यहाँ से H, यहाँ से OH दोनों मिलकर बना लें वाटर, तो आपके पास स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा COH, CH, CH3, NH, CO, CH2 taken to CH, NH2, and then COOH। तो ये मैंने दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते थे, ये दोनों बना के दिखाए मैंने आपको। आप इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, next is the isoelectric point of alanine is 6.0 and glutamic acid is 3.2। isoelectric point, a point जिस पे कोई नेट ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। when no net electrical charge exist, यानी अमीनो एसिड जो हैं वो ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑलराइट, a mixture of the dipeptide L-glutamic acid and its two constituent amino acid alanine and glutamic acid is analyzed by electrophoresis using buffer solution at pH 6। Okay, that's a very important pH, guys। So अगर मैं आपको याद कराऊं अपना लेक्चर, और मैंने उस लेक्चर में क्या कहा था आपको कि pH of buffer greater हो जाए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की pH से,
obviously CWH will deprotonate. सही है? In that case, glutamic acid will deprotonate, इसलिए क्योंकि उसकी जो pH वैल्यू दी हुई है एग्जामिनर ने वो बफर की pH से कम है, इसलिए वो डीप्रोटोनेट होगा। जबकि एलानिन और बफर की पीएच सेम है, इसका मतलब यहाँ कोई डीप्रोटोनेशन नहीं होगी, इट विल रिमेन न्यूट्रल। So CWH will deprotonate in glutamic acid. Okay. ये है ग्लूटामिक एसिड आपके पास NH2 CH CWH CH2 taken to CWH। ये जब डीप्रोटोनेट होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, देन CH, ये हो जाएगा CW नेगेटिव, CH2 taken 2 and this is CW negative। तो याद रखिएगा कि it has 2 minus charge, so it will deflect most। ठीक है? अच्छा, अगर आपने ये वाला लिया है या ये वाला ले रहे हैं आप स्ट्रक्चर, बहरहाल दोनों में डीप्रोटोनेट। ओके, यहाँ से भी डीप्रोटोनेट हो जाएगा। चलो देखते हैं। ड्रॉ एंड लेबल द 3 स्पॉट्स on figure 7.2 to indicate the predicted position of each of these 3 species after electrophoresis। explain your answer। अच्छा, क्योंकि एलानिन जो है वो न्यूट्रल है, सो एलानिन तो यही रहेगा ऑन दिस। ठीक है? ग्लूटामिक एसिड का डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, और क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज हुआ है इसलिए इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, सो ये आपका ग्लूटामिक एसिड हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपके पास जो डाइपेप्टाइड है, अगर हम ये वाला डाइपेप्टाइड यूज करें तो इसमें भी डीप्रोटोनेशन होगी, ये दोनों CWH कन्वर्ट हो जाएंगे CW माइनस में। तो इससे रिलेटेड आपके पास LgLu आ जाएगा। ठीक है? उप्स, ये मैंने ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास। सो ये बेसिकली ग्लूटामिक एसिड हो गया, ये बेसिकली डाइपेप्टाइड हो गया, और ये टेक्निकली एलानिन हो गया। अच्छा जी, अब मसला ये है, लिखना है एलानिन has an isoelectric point of pH 6, so it will remain neutral and will be present on the original spot। Both glutamic acid and dipeptide and L-glue will deflect
towards positive terminal due to deprotonation. Glutamic acid will deflect most because of a smaller mass to charge ratio, while dipeptide has higher mass to charge ratio, so it will deflect less. So it will cover the less distance, okay, from the original spot. Lot of working, lot of explanation. आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपका डाइपेप्टाइड है इसका एमआर ज्यादा है, जब एमआर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है इसका डिफ्लेक्शन कम होगा, वो मास टू चार्ज रेशियो उसी के अंदर आ जाता है सारा, ठीक है। नेक्स्ट, oh my goodness, alanine reacts with methanol to form an ester G under certain conditions. The proton NMR of spectrum G dissolved in D2O shown in figure 7.3. Okay, तो आपके पास ये TMS की पीक है, ये डबलेट है, ये सिंगलेट है और ये क्वाड्रेट है. Since you have 3 peaks, which means you have 3 chemical environments. ठीक है. Now the next is, ये आपके पास CH3 है, इसके ऊपर n+1 रूल अप्लाई नहीं होगा, that will give you singlet. और क्योंकि CH3 is attached to more electronegative element, which is why इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज 3.2 से 4.0 डेल्टा होगी. ये आ गई आपके पास सिंगलेट. इसको देखिए, इसके नेबर में 3 प्रोटॉन्स हैं, तो 3+1 कितना होगा 4, तो दिस विल गिव यू क्वाड्रेट. ये आ गई क्वाड्रेट आपके पास. और आप नोट करें, ये CH3 है, इस CH3 के नेबर में जो कार्बन है उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो 1+1 क्या हो जाएगा, डबलेट. तो ये डबलेट आ गई. ठीक है, कि ये डेटा गिवन है, हमसे यकीनन कुछ आगे मांग रहे हैं वो. ओके, कंप्लीट द टेबल 7.2 फॉर द प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ जी. 1.4 के ऊपर जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो क्या है, 1.4 के ऊपर स्प्लिटिंग पैटर्न है डबलेट का. ठीक है, तो डबलेट बोलेंगे हम यहाँ पर. so डबलेट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, फॉर द पीक. तो भाई आप जानते हैं कि डबलेट किससे मिल रही है, 3 प्रोटॉन्स के नेबर में जो कार्बन है उससे मिल रही है ना, तो 3 प्रोटॉन्स की वजह से, राइट. सो हम लिखेंगे 3H एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एडजेसेंट कार्बन एटम. कितने प्रोटॉन्स थे एडजेसेंट कार्बन एटम में, एक प्रोटॉन था, तो हम 1 लिखेंगे यहाँ. फिर 3.5 पे चलते हैं. 3.5 के ऊपर आपके पास सिंगलेट है, और सिंगलेट जो है वो 3 प्रोटॉन्स की थी, और उसके नेबर में कोई भी प्रोटॉन नहीं था. ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन एटम से अटैच था. देन 4.0 पे क्वाड्रेट है. क्वाड्रेट कितनी प्रोटॉन्स की वजह से आ रही थी, 1, क्योंकि उसके नेबर में 3 हाइड्रोजन एटम्स थे, राइट. द प्रोटॉन NMR spectrum of G dissolved in CdCl3 is obtained. Describe the difference observed when the spectrum and the proton NMR spectrum D2 is shown. Explain your answer.
So simple hydrogen and deuterium both are exchanged with both are exchanged in D2O. So one peak for NH2 will disappear मैं कुछ क्लियर नहीं हो रहा एक मिनट ओके CdCl3 में आपके पास जो पीक है NH2 की वो डिसअपियर नहीं होगी वो नजर आएगी क्योंकि प्रोटॉन एक्सचेंज होगा नहीं will appear in CdCl3 while with D2O the peak of NH2 will disappear. ठीक है जी CdCl3 में अपियर होगी और D2O में डिसअपियर हो जाएगी So that's the end of this question number 7. Let's start question number 8, guys. Complete table 8.1 by placing one tick in each row to indicate the sign of each type of energy change under standard condition. Lattice energy is always exothermic, so it must be negative. Enthalpy change of hydration is always endothermic. Enthalpy change of solution can either be positive or negative. Depend करता है compound किस type का है. ठीक है. Define enthalpy change of hydration. So enthalpy change of hydration is easy. Standard condition use नहीं कर रहे examiner. ये ध्यान में रखिएगा. 1 mark की definition. Okay. Enthalpy change occur when 1 mole of compound, not when 1 mole of gaseous cation and anion gaseous cation and anion is dissolved in large amount of water to give an infinite dilute solution. Okay. Table shows some various energy changes which can be used in the following questions. Okay. Select the used relevant data from table 8.2 to calculate the lattice energy of calcium bromide. It may be helpful to draw energy cycle. Since we need to find out the lattice energy, I think we need to go for the bond number cycle. और वो energy cycle भी कह रहे हैं तो हम energy cycle और वो साथ में कह रहे हैं show your working. Okay, show your working. तो ये है आपके पास gaseous calcium ion
ये है आपके पास गैसियस ब्रोमाइड आयन, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे कैल्शियम ब्रोमाइड सॉलिड में, एंड दैट्स योर लैटिस एनर्जी। सही है? अब जाहिर सी बात है, कैल्शियम इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर प्रेशर, ब्रोमीन इज लिक्विड एट आरटीपी। ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होकर इसमें कन्वर्ट होंगे, दैट इज फॉर्मेशन। और ये दोनों जब इसमें कन्वर्ट होंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे डेल्टा H1 से। सही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैरो बना देंगे। सो यहां से आपके पास डेल्टा H1 प्लस लैटिस माइनस फॉर्मेशन इक्वल्स टू 0, और मुझे लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो ये हो जाएगा लैटिस इक्वल्स टू डेल्टा HF माइनस डेल्टा H1। अब पॉइंट इज कि डेल्टा H1 में क्या क्या चीजें होंगी, है ना? सो मुझे ये जानना है कि डेल्टा H1 में कौन कौन से स्टेजेस और प्रोसेसेस होंगे, सो दैट मैं टेबल को बहुत कन्वीनियंटली यूज कर लूँ। जाहिर सी बात है, कैल्शियम सॉलिड है, ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो एटोमाइजेशन ऑफ कैल्शियम होगा। फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम होगा, बिकॉज 2+ चार्ज है कैल्शियम के ऊपर, राइट? प्लस ब्रोमीन लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो एटोमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन होगा, एंड ऑब्वियसली मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, क्योंकि 2 ब्रोमीन एटम्स है मेरे पास। प्लस फर्स्ट ओके, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, बिकॉज वी हैव 2 ब्रोमाइड आयंस हियर। बेसिकली ये है मेरे पास डेल्टा H1, इसमें मैंने वैल्यूज प्लग इन करनी है। सो मैं डेल्टा H लैटिस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इक्वल्स टू डेल्टा HF स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, standard enthalpy change of formation. Formation of calcium bromide is minus 682.8, minus 682.8, I believe, minus delta H1. Okay. Atomization of calcium plus 178.2, plus 178.2 plus first and second ionization energy of calcium plus 590, 1145. 590 plus 1145, उसके बाद प्लस atomization of bromine. Atomization of bromine is this, plus 111.9 plus 111.9 multiplied by 2 plus first electron affinity of bromine, ये रहा minus 324.6, minus 324.6, minus 324.6, so ये हो जाएगा minus 324.6. Oh my goodness.
into 2, so यहाँ से डेल्टा H लैटिस और कैल्शियम ब्रोमाइड आपके पास कितना हो जाएगा? सो -2170.6 kilojoules per mole, तो ये हो जाएगा -2710. ओके, alright, next is, that's lot of calculation. Select and use relevant data from table 8.2 to your answer to C1 to calculate the standard enthalpy change of hydration. It may be helpful to draw energy cycle. 2 marks का part है. एनर्जी साइकिल में बना देता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है इसमें, बहुत क्रिस्टल क्लियर हमारे पास डेटा है, बट साइकिल भी बनाई जा सकती है, वो तो कोई इशू नहीं है, साइकिल भी बना सकते हैं, बना देते हैं साइकिल भी. कैल्शियम ब्रोमाइड है हमारे पास, सॉलिड होता है ये, इसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में प्लेस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ब्रोमाइड एक्वस में. इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन. सही है. तो ये है आपके पास गैसियस कैल्शियम आयन और ये है आपके पास गैसियस ब्रोमाइड आयंस. अगर मैं इनको एक्वस कैल्शियम ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर दूं, देन इट्स गोइंग टू बी हाइड्रेशन. और अगर ये दोनों मिलकर इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड में, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी लैटिस एनर्जी. ठीक है. सो फॉर्मूला हमारे पास कुछ ये होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू -Le plus hydration. That's what we have discussed in the class as well. Solution of calcium bromide should be given. ये दी हुई है -103.1, बैक एंड फोर्थ जाना पड़ेगा, -103.1 इक्वल्स टू माइनस लैटिस एनर्जी आपने कितनी कैलकुलेट की थी, -2710. ये हमने इस पार्ट से कैरी फॉरवर्ड कर लिया, प्लस हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन चाहिए मुझे. So hydration of calcium ion is -1579, and hydration of bromide ions, which we really need to find out, right? And since we have 2 bromide ions, so it's going to be 2x. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेट मी फाइंड आउट. x की वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास, -347 kilojoules per mole. तो यहाँ लिख दीजिए -347. ठीक है. Okay, next is the enthalpy change of hydration of bromide ions is more negative than the enthalpy change of hydration of iodide ions. Explain why. Obviously, bromide ka ionic radius is smaller than iodide ions, so it has a strong nucleus to valence electron attraction. So obviously, ion और water molecule के दरमियान जो electrostatic attraction है वो bromide के केस में stronger होगी, which is why it is more exciting. So आप लिखेंगे bromide ions has a smaller ionic radius
So it has a stronger electrostatic attraction with water molecule. Iodide ions has larger ionic radius. So it has weak electrostatic attraction with water molecule. Okay, that's the end of this paper, guys.